Hi kids, welcome to today's session. So we are going to continue discussing our chapter that is transport in plants. And what are we going to talk in today's session? So in today's session, we will be discussing about facilitated diffusion and active transport, the two other means of short distance transport inside a plant. So let's move forward. This is my introduction for the students who don't know me. I'm Himanshi Singh, biology faculty, and I have 5+ years of teaching experience, mentored and guided 10,000+ students. Best NEET Biology score produced by my student is 340 out of 360 and CSIR net GRF qualified. Now let's move to your homework question. So this was your homework question, kids. The given table shows the property of 4 cell systems, A, B, C, and D, right? The maximum rate of inward diffusion, right? The inward diffusion of water will be observed in which of these systems? So we have the first system, that is system A, having a intracellular concentration. Intra means within. So it is within the cell concentration of water, that is 0.09 moles, right? Next one is extracellular, which means outside the cell. So outside the cell, the concentration is 0.01. If we look after the difference is 0.11 minus 0.9, that is 0.02 moles, right? So this is the difference. The next system is B, where the difference will be 0.3 m. The next one is C system. In the C system, the intracellular concentration is 0.05, whereas the extracellular concentration is 0.7. So if we are going to subtract 0.70 from 0.05, it will be equals to 0.65 m, right? And lastly, the last one, we are going to get 0.57 m. Now, where are we going to see a major difference, right? Now, the question is, where are we seeing a major difference? So, major difference or the higher concentrational difference, right? The higher concentration gradient. Higher concentration gradient is present in system C, right? System C is having the highest concentration gradient, which means it is going to have the higher or the faster diffusion, because we know diffusion is going to get affected by 5 different parameters. It is going to get affected by 5 different parameters. The first one is concentration gradient, the strength of concentration gradient, how great the concentration gradient is, temperature and pressure, along with this the solubility of the molecules in the plasma membrane, nature of the molecule, whether the molecule is polar or non-polar, and lastly, what is the size of the molecule. So, higher the concentration gradient, the faster will be the diffusion. The correct answer for this particular question will be option C. So, C is the correct answer. Moving forward to the next one. Okay, let's move. Now we are going to talk about the means of transport. We are going to continue discussing it, and the question, what are the things that we are going to talk about? It's facilitated diffusion and active transport. So, let's get started. So बच्चों लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था हाइड्रोफोबोसिटी ऑफ सेल मेम्ब्रेन. हाइड्रोफोबोसिटी मतलब कि हमारे पास जो सेल मेम्ब्रेन है वो कैसी है, हाइड्रोफोबिक है, which means it is going to repel water. Hydrophobic means that the cell is going to repel water. The plasma membrane is going to repel water. Now this nature of the plasma membrane is coming because of the major component, that is lipids. So the lipids that are the major component of our cell membrane. These lipids are going to make an hydrophobic interior, right? So what exactly happens is that if a water molecule or a polar molecule, a charged molecule wants to cross the plasma membrane, it is not being able to cross the plasma membrane because of this lipid layer. So it will be repelled back. Now how the water molecule is going to enter inside the cell? Yes, if we have this kind of condition, then how the water molecule, polar molecule, or the charged molecules are going to enter inside the cell. So in the last class itself, we have discussed that yes, there will be presence of a method known as facilitated diffusion. So facilitated
Facilitated का क्या मतलब है बच्चे? Facilitated means that we are going to help in the process, right? So it is help. Let's facilitate this thing. Facilities, something that is going to make the things easier, right? For example, like Himanshi Ma'am is making your NEET preparation easy. So facilitated diffusion means that there is some molecule that is going to help in the process of diffusion. And that molecule which is going to help in the process of diffusion is proteins. Yes. So plasma membrane proteins are going to help in the process of diffusion. प्लाज्मा मेम्ब्रेन में जो प्रोटीन्स प्रेजेंट है वो डिफ्यूजन में हेल्प करेंगे और इसे हम क्या बोलते हैं? फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन. सो सब्सटेंसेस दैट हैज hydrophilic moiety. Hydrophilic moiety. Moiety means they have that kind of character. They have charges on them, right? They are hydrophilic in nature. Find it difficult to pass through the membrane. Yes, they cannot cross the membrane easily. बहुत मुश्किल है उनके लिए membrane cross करना. Why? Why? Due to lipid bilayer. This lipid bilayer is going to prevent them from moving across the membrane. So what exactly is going to happen? Their movement will be facilitated. कौन facilitate करेगा उनकी movement को? It will happen with the help of membrane proteins. So these membrane proteins will help in the process. So जैसा हम यहाँ पे देख सकते हैं, these are the molecules. If they want to cross the membrane from here, no, it's not going to happen. They will be repelled back. Hence, they are going to use your membrane protein. This membrane protein will help in the process of crossing the plasma membrane, and we call it as facilitated diffusion. तो ये plasma membrane क्रॉस करने के लिए क्या यूज करेंगे? मेम्ब्रेन प्रोटीन्स को, और इस तरीके के मूवमेंट को हम बोलते हैं फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन. नाउ व्हाट आर द स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन? सबसे पहली चीज, क्योंकि इसमें स्पेशल प्रोटीन्स इन्वॉल्व होते हैं, राइट? स्पेशल प्रोटीन्स हैं, कुछ स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स प्रेजेंट होते हैं इन मॉलिक्यूल्स के पास, इन प्रोटीन्स के पास, जो स्पेसिफिक मॉलिक्यूल को मूव करने में हेल्प करेंगे, राइट? जैसे हिमांशी मैम बायो पढ़ा रही हैं, कोई और टीचर आपको केमिस्ट्री पढ़ाएगा, कोई और टीचर आपको फिजिक्स पढ़ाएगा, राइट? सो वी आर स्पेसिफिक इन आवर सब्जेक्ट. तो ये हमारे पास स्पेसिफिक प्रोटीन्स हो गए. ये स्पेसिफिक प्रोटीन्स हमारे पास मॉलिक्यूल्स को मूव करने में हेल्प करेंगे along the concentration gradient. Yes, the movement will be along the concentration gradient, which means it will be downhill movement or simply from higher concentration to lower concentration. So this is first thing. Second thing, it is without expenditure. So we can call it as a passive process. Yes, कैसा प्रोसेस है बच्चों? पैसिव प्रोसेस है. क्योंकि ये डिफ्यूजन है तो ये जाहिर सी बात है स्लो प्रोसेस होगा, अपने पेस पे चलता है आराम से, कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट के अकॉर्डिंग कितनी ज्यादा स्ट्रेंथ है उसके हिसाब से हमारे पास प्रोसेस चलेगा. नाउ वन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज कि कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट शुड बी प्रेजेंट ऑलरेडी, राइट? कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट विल नॉट बी क्रिएटेड, it should be present already. The protein molecules are just going to facilitate the process. वो उसको आसान करने वाले, ठीक है? So ये हमारे पास हो गए 3 मेन पॉइंट्स. इसके अलावा फोर्थ इंपॉर्टेंट पॉइंट इज स्पेशल प्रोटीन्स आर प्रेजेंट. अभी जो स्पेशल प्रोटीन्स है ना बच्चों, जो मेम्ब्रेन में प्रेजेंट है, दैट आर गोइंग टू हेल्प इन द प्रोसेस ऑफ फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन. ये जो स्पेशल प्रोटीन्स है ये क्या करते हैं? इनका काम क्या होता है बच्चे? ये जो स्पेशल प्रोटीन्स है ये अपने नेचर में स्पेसिफिक है. जैसे लिपिड स्पेसिफिक थे कि भैया हम तो सिर्फ फ्लैट फैट्स को ही लेके जाएंगे, है ना? ऐसे प्रोटीन से कहते हैं कि हम भी स्पेसिफिक हैं, हम सिर्फ वाटर को लेके जाएंगे, हम सिर्फ चार्ज आयंस को लेके जाएंगे. जैसे आपने सुना होगा सोडियम पोटेशियम पंप, सुना है आपने? सोडियम पोटेशियम पंप. तो ये जो सोडियम पोटेशियम पंप है ये क्या कर रही है? ये स्पेसिफिक है नेचर में कि ये सिर्फ सोडियम और पोटेशियम को लेके जाएगी, राइट? So the special proteins are specific in nature. They are going to transport a specific molecule across the membrane. For example, like sodium potassium. They are going to carry only sodium and potassium, right? So they are specific in nature. Specific in nature. Okay? So these are the 4 points that you have to remember from your facilitated diffusion. Now moving forward,
There is one very specific thing that we see in the facilitated diffusion is that the transportation rate. The transport rate reaches a maximum when the protein transporters are being used. Now let's understand this concept with a very simple example. For example, like you guys want to go for shopping, or you guys want to go for, some kind of party or something, anything that you enjoy. So you're moving out of your house. This is your house, a beautiful house. Okay. So ये तुम्हारा घर है. And this is your destination. Destination. Now, as the destination is far away from your house, from your home, what is going to happen? You're going to take a cab. Yes. So whenever we want to have a cab, we are going to use different online platforms that provides us cab, right? तो हमने क्या किया, हमने कहीं से कैब बुक कर दी. अब कई बार जब हम कैब बुक करते हैं तो उसमें क्या आता है कि कैब इज नॉट अवेलेबल. कैब इज नॉट अवेलेबल एट दिस टाइम, राइट. तो उस टाइम पे नहीं अवेलेबल है, बट अभी 5-10 मिनट बाद अवेलेबल हो जाएगी, दोबारा ट्राई करना. So cab is not available means that all the cabs in that area are occupied already. Let's say there were 10 cabs, right? All of them are all occupied. All are occupied. Yes, all of them are occupied. Now in this case, what is going to happen? You are the 11th passenger. Yes, you are the 11th passenger. You have to wait. Yes, you have to wait for some time that okay, one of the cab will be empty and then we can cross. तो हमें वेट करना पड़ रहा है क्योंकि हम 11th नंबर पे हैं. जो पहले के 10 पैसेंजर थे उन्होंने 10 कैब ले ली. अब हमें वेट करना पड़ रहा है अपने टर्न के लिए. राइट. तो जो वेटिंग पीरियड हमारे पास आ रहा है दैट इज नोन एज सैचुरेशन. इसको हम क्या बोलते हैं? सैचुरेशन. तो अगर मैं सैचुरेशन को सिंपल भाषा में समझाऊं तो हम सैचुरेशन को कैसे समझेंगे? सैचुरेशन का मतलब क्या हो गया? ऑल द ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स. क्योंकि हम यहाँ पे फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन की बात कर रहे हैं तो मैं ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स बोल रही हूँ. दो सैचुरेशन इज अ नॉर्मल टर्म, राइट, जनरल टर्म है, किसी भी चीज के लिए यूज कर सकते हैं. सो ऑल द ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स आर फिल्ड एंड ऑक्यूपाइड. जैसे तुम लोग भी बोलते ना कि अरे मैम ब्रेन में एकदम सैचुरेट हो गया है मैम, अब समझ में ही नहीं आ रहा है क्या करे, राइट. जो सैचुरेशन वाला पॉइंट आता है मतलब पूरी तरीके से भर गया, अब जगह नहीं है ना, थोड़ा सा टाइम दो ताकि हम चीजों को प्रोसेस कर सके. सो सेम थिंग इज गोइंग टू हैपन ओवर हियर. प्रोटीन सारे के सारे क्या हो जाएंगे हमारे पास? ऑक्यूपाइड है, फिल्ड है, जिसकी वजह से मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट अभी हमारे पास मैक्सिमम रेट पे चल रहा है. 10 कैब थी, 10 की 10 कैब काम कर रही, मतलब मैक्सिमम रेवेन्यू जनरेट कर रहे, राइट. सो ट्रांसपोर्ट रेट मैक्सिमम है और बाकी के मॉलिक्यूल्स को क्या करना पड़ेगा? वेट करना पड़ेगा. सो दिस इज अ ग्राफ विच शोज द रेट ऑफ डिफ्यूजन. सो अगर आपके पास सिंपल डिफ्यूजन है, सिंपल डिफ्यूजन में तो किसी की जरूरत ही नहीं है, तो जितना ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट होगा उतना ज्यादा आराम से हमारे पास डिफ्यूजन चलता रहेगा, उतना ज्यादा डिफ्यूजन होगा. बट फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन एक टाइम के बाद क्या हो जाएगा? स्टेबल हो जाएगा. सो दिस इज मैक्सिमम रेट ऑफ डिफ्यूजन. ये हमारे पास मैक्सिमम रेट ऑफ डिफ्यूजन है, जहां पे हमारे पास क्या हो गया बच्चा? सैचुरेशन. तो सैचुरेशन का कंसेप्ट समझ में आया या नहीं आया ये कमेंट बॉक्स में बता देना. नहीं आया तो मैम दोबारा से समझाएंगी, ठीक है. बहुत सारे अलग अलग तरीके हैं. देयर आर डिफरेंट वेज टू अंडरस्टैंड सैचुरेशन. So I hope it is clear to everyone. In case if you still have doubts from saturation, don't forget to comment down. और समझ में आ गया तो thumbs up button hit कर देना. चलो, let's move forward. Now facilitated transport is very specific due to specific प्रोटीन्स. जैसा मैम ने अभी आपको एग्जांपल दिया था सोडियम पोटेशियम पंप, है ना. तो सोडियम पोटेशियम पंप हमारे पास क्या कर रही है? सोडियम पोटेशियम पंप इज स्पेसिफिक इन नेचर. So the facilitated diffusion is specific because it has special proteins that are specific in their nature. A special protein will transport a special molecule. For example, like sodium potassium pump, right? It allows the cell to select substance for uptake. Select करेगा. It is selective in nature. It is choosy in nature, right? I am going to transport only potassium. मैं तो सिर्फ सोडियम को ही ट्रांसपोर्ट करूंगा, right? So this kind of movement is present. Along with this, yes, of course, they are sensitive in nature.
इनको कोई कुछ बोलेगा तो बेचारे बुरा मान जाएंगे। सेंसिटिव इन नेचर है टू द इनहिबिटर्स। अब इनहिबिटर्स क्या है? जैसे ये हमारे पास मॉलिक्यूल ट्रांसपोर्ट कर रहा है, राइट, सेलेक्टिव मूवमेंट चल रहा है। अब यहाँ पे बेटा कोई और आके बैठ गया, ये मान लेते हैं हमारे पास सोडियम आयंस है, ठीक है, ये मान लेते हमारे पास सोडियम आयंस। अब सोडियम आयन की जगह पे यहाँ पे कोई और आके बैठ गया, लो बताओ, करा लो काम इनसे, है ना? हो जाएगा मूवमेंट? नहीं हो पाएगा। कैब में कोई पैसेंजर जाके बैठ गया, पैसे देने कोई रेडी नहीं है, पैसे ही नहीं दे रहा, तो क्या करेंगे? कैब तो खाली नहीं हो रही ना, उसके साथ बहस चल रही है। सो दीज आर इनहिबिटर्स। इनहिबिटर इज गोइंग टू ऑक्यूपाई दैट प्लेस विच अलाउज द ट्रांसपोर्टेशन। बेसिकली धरना आ गया यहाँ पे, है ना, तो धरना प्रदर्शन चल रहा है, इनहिबिटर बैठ गया है रास्ते में, तो क्या कर सकते हैं, मूवमेंट हमारे पास नहीं हो पाएगा। सो दे आर सेंसिटिव टू इनहिबिटर्स एंड दीज इनहिबिटर्स आर गोइंग टू ब्लॉक द ट्रांसपोर्ट, दे आर गोइंग टू ब्लॉक ट्रांसपोर्ट। फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन को क्या करेंगे? रोक देंगे, ठीक है। सो हमारे पास एक रास्ता था, रास्ते में हमारे पास कोई इनहिबिटर आके बैठ गया। इनहिबिटर कैन बी ऑफ एनी शेप साइज, इट कैन बी स्पेसिफिक, इट कैन बी सिमिलर, इट कैन बी डिफरेंट, डिपेंड करता है प्रोटीन पे। और ये हमारे पास इनहिबिटर आके बैठ गया, राइट, ट्रांसपोर्ट को रोकने के लिए। तो ये इनहिबिटर हमारे पास आके बैठ गया, जिसकी वजह से अब मूवमेंट हमारे पास क्या हो जाएगी? ब्लॉक हो जाएगी। So another point to remember that it is sensitive to inhibitors, right? 5 पॉइंट हो गए। So 5 पॉइंट्स को हम पहले लिख लेते हैं। फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, क्या क्या चीजें हैं फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में? सबसे पहली चीज, ये एक पैसिव प्रोसेस है। दूसरी चीज, अलोंग द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट चलेगा, अलोंग द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट। फाइनली नेक्स्ट थिंग, पैसिव की जगह पे हम यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं, नो एटीपी रिक्वायर्ड, राइट, नो एटीपी रिक्वायर्ड। नेक्स्ट हमारे पास आ गए स्पेशल प्रोटीन्स आर इन्वॉल्व, स्पेशल मेम्ब्रेन प्रोटीन्स आर इन्वॉल्व। These membrane proteins are specific in nature, right? So proteins are specific, which means कि ऐसा नहीं है कि हमारे पास कोई भी चीज का ट्रांसपोर्टेशन हो जाएगा। दे विल बी सेलेक्टिव ट्रांसपोर्ट ऑफ मॉलिक्यूल्स अक्रॉस द मेम्ब्रेन, ठीक है, which means they will be selective transport of molecules। अगर हमें सोडियम ट्रांसपोर्ट करना है तो सोडियम का ही ट्रांसपोर्ट होगा, ग्लूकोज का ट्रांसपोर्ट करना है तो ग्लूकोज का ही ट्रांसपोर्ट होगा, राइट। इट्स नॉट लाइक दैट एनीथिंग इज गोइंग टू एंटर इनसाइड द सेल, a specific molecule will enter inside the cell, ठीक है जी। चलिए, इसके अलावा दे आर सेंसिटिव टू इनहिबिटर, सेंसिटिव टू इनहिबिटर, ठीक है। और लास्ट पॉइंट हमारे पास आ गया सैचुरेशन, दे शो सैचुरेशन, ठीक है। तो ये लोग सैचुरेशन शो करेंगे, विच मीन्स मैक्सिमम ट्रांसपोर्ट पे पहुंच जाएगा, मैक्सिमम ट्रांसपोर्ट रेट, ठीक है। तो इस तरीके से पहले हमारे पास ट्रांसपोर्ट रेट बढ़ता जा रहा था, एक टाइम के बाद मैक्सिमम पे आके रुक जाएगा। ओके, ऑल द पॉइंट्स आर क्लियर, लेट्स मूव फॉरवर्ड। Now talking about the types of protein. So there are two different types of proteins that helps in the transportation. The first one is carrier protein, another one is channel protein. Carrier protein and channel protein. Channel proteins are further of two different types, that is ion channels and porins. Porins means pores. So they are going to create actual pores inside the membrane, which helps in the transportation. सो इनके बारे में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हमारे पास कैरियर प्रोटीन आ गया कि भाई कैरियर प्रोटीन क्या होता है। सो कैरियर प्रोटीन सबसे पहली चीज बड़े स्पेसिफिक है, जैसे सोडियम पोटेशियम फॉर्म, ठीक है, एंड कैरी द आयन ऑफ द मॉलिक्यूल अक्रॉस द मेम्ब्रेन बाय चेंजिंग शेप। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो, दे आर चेंजिंग शेप, दिख रहा है कैसे शेप चेंज हो रही है। सो दे आर गोइंग टू चेंज द शेप आफ्टर बाइंडिंग टू द मॉलिक्यूल। जिसको भी ट्रांसपोर्ट करना था उसको ट्रांसपोर्ट करते टाइम जैसे उससे बाइंड करेंगे तो इनका शेप चेंज हो जाएगा, दे आर गोइंग टू चेंज देयर शेप एंड हेल्प इन द ट्रांसपोर्ट ऑफ द मॉलिक्यूल अक्रॉस द मेम्ब्रेन, ठीक है। कैरियर प्रोटीन्स आर इन्वॉल्व इन द पैसिव एंड एक्टिव ट्रांसपोर्ट।
तो पैसिव ट्रांसपोर्ट में हेल्प करते हैं. पैसिव ट्रांसपोर्ट मीन्स फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन. ठीक है, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में हेल्प करेंगे. इसके अलावा ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट में भी हेल्प करते हैं. वी विल टॉक अबाउट एक्टिव ट्रांसपोर्ट. पढ़ेंगे हम अभी एक्टिव ट्रांसपोर्ट के बारे में. द नेक्स्ट वन इज द चैनल प्रोटीन. Fine. So the next thing that we are going to discuss is your channel protein. So a channel protein forms the channel in the membrane, right? It is going to form a complete channel. It's like, a underpass. Yes. So it creates a underpass, a tunnel kind of thing. ऐसे tunnel जैसा बना देता है plasma membrane के across, right? So it makes a tunnel. Yes, एक tunnel बन जाती है from where the molecules can pass. Yes, so it creates a channel in the membrane. As you can see, the entire membrane is pierced, right? There is presence of a channel, a tunnel. एक पूरी की पूरी टनल बन गई है जहां से हमारे पास मॉलिक्यूल्स मूव कर रहे हैं. सो सम ऑफ देम आर ऑलवेज ओपन. कुछ तो हर वक्त ओपन रहते हैं. कुछ हमारे पास कंट्रोल्ड होते हैं, विच मीन्स दे आर ओपन इन अ स्पेसिफिक कंडीशन ओनली. Some are large, allowing the variety of molecules to cross. जैसे ग्लूकोज मॉलिक्यूल हो गया. ग्लूकोज कितना बड़ा मॉलिक्यूल है, तो ये ग्लूकोज मॉलिक्यूल भी हमारे पास मूव कर जाता है. तो इतने बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स को भी मूव करने में हेल्प करते हैं. कौन? चैनल प्रोटीन्स. सो वी हैव टू टाइप्स, कैरियर प्रोटीन एंड चैनल प्रोटीन. चैनल प्रोटीन में भी हमारे पास फर्दर दो टाइप के आ गए. सबसे पहला आ गया आयन चैनल्स. तो जैसा नाम है वैसा ही काम है, आयंस का ट्रांसपोर्टेशन कराएंगे. यस, दे आर गोइंग टू ट्रांसपोर्ट योर चार्ज मॉलिक्यूल. जैसे यहाँ पे आयंस मूव कर रहे हैं, सच एज सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, क्लोराइड, मैग्नीशियम, मैंगनीज, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा. ओके, so they move through your ion channels and they are protected from the hydrophobic interior of the membrane. जो बीच में हमारे पास हाइड्रोफोबिक मेम्ब्रेन है, हाइड्रोफोबिक मेम्ब्रेन, इस हाइड्रोफोबिक मेम्ब्रेन से हम क्या कर रहे हैं? प्रोटेक्ट करके रख रहे हैं. दूसरा बेटा हमारे पास आ जाता है पोरिन्स. ठीक है, पोरिन्स जैसा पोरिन्स है, पोरिन्स से आप याद रखो पोर्स. तो ये भी बड़े बड़े पोर्स होते हैं, राइट? जैसे आपके पास चैनल थे, टनल्स थे, वैसे ही टनल्स बन जाएंगे. सो पोरिन्स आर द प्रोटीन्स दैट फॉर्म लार्ज पोर. पर ये कैसे पोर्स बना रहे? बड़े बड़े पोर्स बना रहे, राइट? बड़े बड़े पोर्स in the outer membrane of plastid, mitochondria and some bacteria, allowing molecules up to the size of small proteins to pass through. ठीक है, अब यहाँ पे एक स्पेसिफिक चीज आपको याद रखनी है. हम पोरिन्स की बात करें. पोरिन्स हमारे पास लार्ज पोर्स है, आउटर मेम्ब्रेन में प्रेजेंट है. कहाँ पे? प्लास्टिड. ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया एंड सम बैक्टीरिया. प्लास्टिड, माइटोकॉन्ड्रिया एंड सम बैक्टीरिया. ठीक है, कहाँ पे? आउटर मेम्ब्रेन पे, इनर मेम्ब्रेन में नहीं है, आउटर मेम्ब्रेन में. ठीक है जी. सो दे अलाउ मॉलिक्यूल्स अप टू द साइज ऑफ द स्मॉल प्रोटीन्स टू पास. नेक्स्ट हमारे पास आ गया एक्वापोरिन. बेटा एक्वा का क्या मतलब होता है? जल्दी से बता दो. What does aqua means? Aqua means water. So water porins, water pores. Pores that will allow the water to move is known as porins, aquaporins. So water channels in the cell membrane are a kind of porin proteins made up of 8 different types of aquaporins. तो 8 अलग अलग टाइप के molecules, right? 8 different molecules are going to combine together and they are going to make your aquaporin. तो जैसे हम यहाँ पे ले लेते, कितने हो गए? 1 2 3 4 5 5 हो गए, 6 और 7. ठीक है, तो हमने 7 ले लो, 8 ले लिया. ठीक है, सो वी हैव 1 2 3 4 5 6 7 8. अब ये 8 मॉलिक्यूल्स हमारे पास एक साथ आ जाएंगे एंड दे आर गोइंग टू क्रिएट अ पोर, राइट? सो सेंटर में हमारे पास एक पोर क्रिएट हो जाएगा. बड़ा डिफिकल्ट है यार. पोर क्रिएट करना है. 1 मिनट. चलो तो ठीक है, तुम्हारी मैम ने पोर क्रिएट कर लिया. यू गाइस कैन सी देयर इज अ पोर, राइट? तो ये एक पोर बन गया है हमारे पास एंड दिस पोर विल अलाउ द एंट्री एंड एग्जिट ऑफ योर वाटर मॉलिक्यूल. ठीक है, सो दिस इज एक्वापोरिन. एक्वापोरिन आपके पास प्लाज्मा मेम्ब्रेन्स में प्रेजेंट होगा, एक यूकैरियोटिक सेल में भी प्रेजेंट होगा. ठीक है, अब मैकेनिज्म ऑफ मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट की बात करें
तो डिपेंडिंग अपॉन कि कितने मॉलिक्यूल्स मूव करें, दो तरीके का है हमारे पास। यूनिपोर्ट, यूनि का मतलब क्या होता है बेटा? यूनि मीन्स वन, एंड को का मतलब क्या होता है? को मतलब दो, दो दो या दो से ज्यादा, राइट? सो अभी के लिए हम ये मान लेते हैं कि को का मतलब हो गया मैनी। सो यूनिपोर्ट जहां पे सिर्फ एक ही मॉलिक्यूल मूव करेगा, और को ट्रांसपोर्ट जहां पे हमारे पास दो मॉलिक्यूल्स या दो से ज्यादा मॉलिक्यूल्स मूव करेंगे। अब जब हमारे पास एक है तो बेटा एक तो या तो अंदर जाएगा या तो बाहर आएगा, है ना? एक ही मॉलिक्यूल है। पर जब हमारे पास दो मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है तो वो दोनों के दोनों एक ही डायरेक्शन में जा सकते हैं, या फिर तो वो दोनों के एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में जा सकते हैं। So the molecules can move in the same direction or they can move in opposite directions, right? So इसको हम क्या बोलेंगे? Symport and antiport. We are going to discuss it in detail. चलो, the first one is uniport. When a molecule crosses the membrane independent of the other molecule. इसे कोई लेन देन नहीं है यार, अगल बगल में कौन जा रहा है कौन नहीं जा रहा है, कोई मतलब ही नहीं है यार। मैं अकेला हूँ, है ना? या अकेला रही है, अकेले चल रहा है। सो a single molecule is moving independent of the other molecule, right? He is carefree molecule, like carefree, freedom, liberty, everything, सब कुछ present है इसके पास, right? So we call it as uniport. Single molecule is moving, as you can see over here. Next one is symport. Now what does the word sim means? For example, like symphony, or there is presence of syngamy, or there is presence of lots of words like sin and sim. What does it means? It means same. Same. So if there is port means transfer, right? So if there is transfer in a same direction, we call it as symport, right? So you can see two different molecules in same direction, symport. Two different molecules in same direction, दो अलग अलग molecule. If two types of molecules move together in a same direction, we call it as symport. Similarly, we have anti, यार तू मेरे anti ही रहा कर, right? Or we can call it as antiport, whatever you want. It's your wish. So we have this antiport or antiport. What does the word anti means? Anti means against. क्या तुम हमेशा मेरे anti रहा कर. So anti means against. The molecules are going to move against each other. Yes, one of them is coming inside the cell or outside the cell. This is out, extracellular fluid, extra, outside the cell, intra, within the cell. So this is within the cell. So something is coming inside and something is moving outside against each other. What are we going to call it as? Antipode. So two molecules in opposite direction, antipode. Okay, now we have discussed about the diffusion, simple diffusion, which is going to take place on its own. It doesn't require anyone's help. And it's like a free process, like going on and on and on, and it's a slow process. The next one is facilitated diffusion, which is going to help certain hydrophilic molecules, polar molecules, ions, and large molecules to cross through the plasma membrane. Yes, that is facilitated diffusion. But now the question is, what will happen when a substance needs to be transported against its concentration gradient? Against its concentration gradient means that the molecule needs to be moved from lower concentration to higher concentration. Let's say, for example, like our cell is already water, right? It's like 90% of water. But still cell needs some more water. और पानी चाहिए हमें। ये सेल के पास बहुत सारा ग्लूकोज है, उसको और ग्लूकोज चाहिए। ये उसके पास बहुत सारा सोडियम है, अभी भी उसको और सोडियम चाहिए। तो इस केस में क्या होगा? मॉलिक्यूल्स कैसे मूव करेंगे, राइट? सो इन दिस केस वी हैव समथिंग नोन एज एक्टिव ट्रांसपोर्ट। क्या प्रेजेंट है बेटा हमारे पास? एक्टिव ट्रांसपोर्ट। तो बेटा जी ये एक्टिव प्रोसेस है। एक्टिव मीन्स इट इज गोइंग टू रिक्वायर एनर्जी। एंड व्हाई एनर्जी इज रिक्वायर्ड? यस, व्हाई इज वेरी इंपॉर्टेंट. इट कैन बी आस्क्ड इन योर assertion and reason. Why active transport is going to use ATP molecule? Because the molecules are pumped against concentration gradient. We are going to throw the molecule, right? The molecules are pumped. We are going to push them. धक्का देंगे उनको
अंदर भेज देंगे, राइट? सो एक्टिव ट्रांसपोर्ट रिक्वायर्स एक्स्ट्रा एनर्जी टू पंप दीज मॉलिक्यूल्स. मॉलिक्यूल्स को उसके कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट के अगेंस्ट लेके जा रहे हैं, मतलब नेचर के अगेंस्ट है ना, इट इज अगेंस्ट नेचर, नेचर के अगेंस्ट है, तो अगेंस्ट है नेचर के. In this case, what is going to happen? We need some bribe, corruption. बेटा ATP पैसा लगेगा इसके लिए. It requires money, है ना? जब भी कुछ इलीगल कराना होता है ना, अगेंस्ट नेचर, या हम इसको लिख देते हैं इलीगल. कोई भी इलीगल काम कराना तो बेटा पैसे लगेंगे, है ना? सो ये पैसे क्या है हमारे पास? ATP मॉलिक्यूल. सेल की ATP करेंसी क्या है? ATP. So it requires currency, that is ATP molecules. Hence, it is active transport. So need ATP, that is cell currency, for the corruption, because the process is taking place against the nature's law. It's illegal. It's not allowed, right? Okay. So active transport uses energy to transport and pump molecules against concentration gradient. Now talking about against concentration gradient, it can be written in some simple words. Gradient, which is also known as lower concentration to higher concentration, and one more word also known as uphill movement. Yes, the movement is going to take place uphill. So just have a look at my hand, right? So we are moving from lower concentration to higher concentration. Can you see the movement? Lower concentration to higher concentration. So we are moving up on a hill, right? We are moving upon the hill against gravity. So it is uphill movement. Yes, it is uphill movement. So these are the three different words by which we call against concentration gradient, lower concentration to higher concentration, or uphill movement. And all of them are going to require energy because it is against the nature's law. Let's move forward. So the active transport is carried by the specific membrane proteins because it involves specific membrane protein. Can you give me two properties of active transport? Yes, specific membrane proteins present हैं, इसकी वजह से क्या होगा? It is specific in nature. It will transport only certain molecules, not everyone. Certain molecules, certain specific molecules, and it will show saturation. Yes, because the cap molecules are involved, so saturation will be present. So active transport is carried out by specific membrane proteins. ठीक है, membrane proteins की होने की वजह से it is specific in nature. It will transport a specific molecule, and we can see the process of saturation. Right? Different proteins in the membrane are going to help in the active or passive transport. कुछ प्रोटीन्स हमारे पास फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में हेल्प करेंगे, कुछ प्रोटीन्स हमारे पास एक्टिव ट्रांसपोर्ट में हेल्प करेंगे. सो डिफरेंट प्रोटीन्स ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन are going to help in some of them are going to help in the facilitated diffusion, that is passive transport, and some of them are going to help in active transport. I hope it is clear to everyone. So the ATP molecule will be broken down into ADP plus inorganic phosphate, and there will be release of lots of energy. This energy will be utilized in the process. Moving forward to the next one. The pumps are proteins that use energy. So whenever we use the word pump, which means there is use of energy to carry the substances across the cell membrane. So this is your sodium potassium, as you can see over here. So this is your sodium potassium. This sodium potassium pump is going to transport the molecules against concentration gradient. Yes, from lower concentration to higher concentration, also known as uphill transport. Again, it can reach a maximum value, which is saturation. It can reach to saturation, and saturation is going to come due to transport carrier proteins. Yes, transport or the carrier proteins. Next one. Because proteins are involved, they are going to be very specific in nature. Along with this, they will be sensitive to inhibitor.
similar to facilitated diffusion because it also involves protein. फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में भी प्रोटीन्स इन्वॉल्व थे, तो इसकी वजह से हमारे पास एक्टिव ट्रांसपोर्ट में भी क्या होगा, स्पेसिफिक नेचर प्रेजेंट होगा और सेंसिटिविटी प्रेजेंट होगी टुवर्ड्स द इनहिबिटर. तो ये हमारे पास ब्लॉक हो गया, इनहिबिटर ने आके रास्ता बंद कर दिया, धरना प्रदर्शन कर दिया, कुछ नहीं कर सकते. Now this is a comparison of the different transport processes: diffusion, facilitated diffusion and active transport. So proteins in the membrane are responsible for facilitated diffusion and active transport. Hence show common characteristics like liable to saturate, saturation show कर सकते हैं, they can get saturated. Respond to inhibitors, they are sensitive to inhibitor. Under hormonal regulation, which means that the hormones can regulate. They can be controlled, right? They're not going to work every time. Some of them are going to work every time and some of them will be under the control or regulation of their hormones. Other than this, if we talk about diffusion, whether it is facilitated or a simple diffusion, it will take place only along a concentration gradient and do not use energy, which means it is a passive process. Yes. So these are the similarities and dissimilarities. Passive transport, so you can see it's downhill movement. It's such a beautiful image. कितनी प्यारी image है जो आपको downhill movement, high concentration to low concentration and along the concentration gradient को समझाता है. तो downhill movement हमारे पास कैसे है, easy है. बॉल अपने आप नीचे आती जा रही, कुछ करना ही नहीं है, no energy required. No energy. Yes. Whereas in the active transport, because we are moving uphill, yes, it is uphill movement. It is going to require energy. Energy is used. Energy means, in case of cell, ATP molecules. Simple. Now this is a table from your NCERT, comparison of the different transport proteins. So special proteins are required. Simple diffusion does not require anything. Facilitated and active transport does require membrane proteins. Yes, membrane proteins are required, which can be channel protein, carrier protein, ion channel, porins, etc. Selective nature is going to come because of the protein, so it is present in the facilitated diffusion and active transport. Facilitated diffusion और active transport दोनों में present होगा. ट्रांसपोर्ट का सैचुरेशन, दोबारा सैचुरेशन किसकी वजह से हो रहा है, वी आर गोइंग टू सी दिस सैचुरेशन बिकॉज ऑफ प्रोटीन्स. यस, सो प्रोटीन्स आर प्रेजेंट hence there will be saturation. Uphill transport, it is going to happen only in one place, that is active transport. And because the active transport is uphill, which means against concentration gradient, it is going to use energy. तो अपहिल में हमारे पास क्या होगा, एनर्जी यूज होगी. सो ओनली वन प्रोसेस रिक्वायर्स एनर्जी, दैट इज एक्टिव ट्रांसपोर्ट. सो आई होप ऑल द थ्री प्रोसेसेस आर क्लियर: डिफ्यूजन, facilitated diffusion and active transport. One very important thing is that these three different types of transport processes are present in every living organism. It's not just about your plants, but it is present in humans, it is present in the other animals, bacteria, etc. So everywhere, it is common for everyone, right? Okay, so with this, it's quiz time. In case if you guys have any doubts, drop it in the comment section. If you have any suggestions, drop it in the comment section. And I will look after it. Now it's your quiz time, so all the very best to everyone. And here comes your first question. So in active transport, carrier proteins are used, which use the energy in the form of ATP2. Read the options carefully, kids. Take your time.
Okie dokie kids, are you guys ready? So let's see what's the correct answer. So the correct answer is transport molecules against the concentration gradient of the cell. So in the okay, why is it going to use the energy? Energy is used because there is uphill transport. There is something that is against the nature's law. So which means that the transport of molecules against the concentration gradient. Okay, for the first one, it's cell wall, right? It's not cell wall, it's cell membrane. Cell wall is completely permeable. Completely permeable means kids that it allows the free movement of molecules, right? Allow free movement of molecule. She is like a carefree person, right? Like it's a door, it's a gate, and it's always open for everyone. Always open for everyone. It's like you can come inside the cell, no issues. Yes, you can come inside the cell. Oh, wow. Calcium, welcome to the cell, right? So it's not going to stop anyone from entering the cell. It's a free movement, right? Cell wall is not going to interfere with the movement. Okay. Along the concentration gradient, movement will take place in your active, oh sorry, in your diffusion and your facilitated diffusion. Next question, the movement of the molecule across a membrane independent of the other molecule in. Easy peasy lemon squeezy. Very easy peasy lemon squeezy question. Read the question carefully, NCERT statement. Let's move forward. And the correct answer is option 2, that is uniport. With this, here comes your homework. So the homework question is in front of you. Read the question carefully. Drop the answer in the comment section below. So the main difference between the active and the passive transport across the cell membrane is. So don't forget to give the answer in the comment section. And with this, we are done with your session for today. Thank you so much, kids. Don't forget to hit the thumbs up button, share the video, subscribe to the channel if you haven't subscribed yet. And in case if you guys have any doubts or any kind of suggestion, drop it in the comment section. I will see you guys soon in the next session of this particular chapter, which is very important. We are going to talk about the plant-water relationship. We are going to discuss about osmosis, osmotic pressure, diffusion pressure, etc. The things that are actually difficult from this chapter, right? So we are going to meet soon. Till then, always keep on smiling. Bye bye, everyone.